I think many of you have joined the session. So good evening to all. This is going to be a very first session where I will talk about the official syllabus of GATE 2024 for all the branch of engineering, not only for GATE computer science, not only for GATE data science and AI, it is for all the branch of engineering, you can say, right? So the very first section here they have mentioned is the verbal aptitude, and that depends upon your presence of mind, how much skill you have in English. Though I will share my own concept so that you can solve any question in the GATE examination. Hi Romit, yes. तो मैं आपको अपना टेक्निक बताऊंगा कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, तब भी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। ये मेरा गारंटी रहेगा अगर आप वो तरीका फॉलो करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो इसमें सिलेबस दिया हुआ है तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, राइट। टेंसेस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, these things I'm not going to talk about, remember guys, okay, that I understand that you know, but few things I will tell you at the end of aptitude, quant aptitude you can say, ठीक है। मैं आपको कुछ अपने तरीके बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए गेट में क्वेश्चन इंग्लिश के। फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर देखो, the quant section, that is quant, this I'm going to talk, like I'll start from the number system. So they have given here the very first topic is DI, data interpretation, where they have talked about data graphs, the bar graphs, pie chart and other graphs representation like histogram and all, 2 and 3 dimensional plots, maps, tables, numerical computation and estimation like ratios, concept of ratio, percentage, okay, powers, exponent, logarithms. This topic already I have covered, I think, in the part of probability and statistics. Yeah, good evening, Asdeep, right? So PNC, okay, PNC, I think after attending my classes, you will never say that, sir, I need again PNC. Okay, the way we have discussed. तो आप लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो एक बार फिर से कर लेना क्योंकि ये एप्टीट्यूड का पार्ट है, ठीक है। सीरीज, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, ओके, एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूँ, मतलब आप समझ जाओ परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको क्या फोकस करने वाला हूँ, मोस्टली आई विल टॉक अबाउट रेशियोज, आई विल टॉक अबाउट परसेंटेज, पावर्स, एक्सपोनेंट, लॉगरिथम्स, राइट। जो टॉपिक इसमें दिए हुए हैं आप उतना पढ़ो, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, जैसे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस इसमें मेंशन नहीं है, आपको पढ़ना है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, राइट। वो भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये परसेंटेज का एप्लीकेशन आपके उसमें भी दिया है, या ज्योमेट्री दिया हुआ है, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, राइट। So geometry is one of the key thing. If you will understand, like if you will attend my classes daily, so now I'm planning ki class will be conducted in the evening only, so that everyone can join. In the morning sometimes it become difficult, right? Okay, now one of the new syllabus is there, that is called spatial aptitude, where I'm going to talk about, you can say that mirror image, water image, some question figure will be given, okay, and they will say that, okay, this question figure has got translated, rotated, scaled, mirrored, assembled, okay, whatever, right? So these kind of things that I'm gonna talk, right? Suppose you take one piece of paper, you fold it many times, right? So how many crease you might get, okay? So this is quite aptitude, you can say this is simple aptitude only, right? So you have to yeah, we will focus more on this, okay. So this is the one thing, and analytical aptitude is there, where logic, deductions, okay. I think many of you might be familiar with this topic, syllogism, okay, logical deduction we call it. Like people say that all A are B, some A are some A are B, right? Like this, okay. Or we sometimes call it, all cats are donkeys, some donkeys are cat, right? So these are the logical deduction, okay. We will talk about that, ठीक है। हाँ, my method will be quite new for you because you will be able to solve the question in few seconds, ठीक है, अगर आप logical deduction 1 hour का सेशन मेरा अटेंड कर लेते हो, ठीक है। तो make sure that attend classes daily, I request that, okay, and you will enjoy it, ठीक है। और
मैथ का सारा कर डालो एंड लेट मी नो इन द ग्रुप कि मतलब आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है? चलो, this is the official syllabus that you can say, but what is going to be my syllabus, guys? What is going to be my syllabus, you say? My syllabus is going to be, or you can say my lecture flow will be like this. तो ये धीरज सर का लेक्चर फ्लो क्या होने वाला है? धीरज सर lecture flow, because I am the kind of guy who always focus on foundation, ठीक है? मैं हमेशा फाउंडेशन में बिलीव करता हूँ। अगर मैं आपको डीआई डायरेक्ट बताना चालू कर दूंगा तो फिर हो गया, डीआई समझ में नहीं आने वाला, राइट? सबसे पहले आपको सीखना है नंबर्स। व्हाट इज नंबर? व्हाई डू वी टॉक अबाउट नंबर्स, राइट? व्हाट आर इंटीजर्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल नंबर? इंटीजर का मतलब क्या है? डेसिमल नंबर क्या है, राइट? रेशनल नंबर क्या है? व्हाट आर द थिंग दैट यू कैन डू विद द नंबर्स, राइट? अगर आपको मैं 2-4 नंबर दे देता हूँ देन क्या क्या आप कर सकते हो, ठीक है? You can add numbers, you can subtract number, you can multiply number, you can divide numbers, right? These things you can do, okay? Any kind of number, I'm not talking about particular number कि अच्छा integer दिया तो आप add subtract कर सकते हो। I can give you any number, you can do all these like you can perform all these operations, ठीक है? आप ऐसे सोचा करो in general अपनी लाइफ में। नंबर का यूज क्यों करते हो ये भी सोचा करो। मैंने बता दिया था पहले, काउंटिंग करने के लिए, राइट? तो बहुत सिंपल है, राइट? तो व्हाट इज माय प्लान इज गोइंग टू बी, फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट नंबर सिस्टम, ठीक है? फर्स्ट टॉपिक इज गोना बी नंबर सिस्टम। You guys can note down these topics, right? And guys, remember this is going to be asked for 15 marks, okay? 15 marks, including English aptitude, English analytical aptitude special, ठीक है? तो स्पेशल आएगा तो आपसे कर ही ले जाओगे अगर आप मेरा सेशन एक बार अटेंड कर लेते हो, ठीक है? नंबर सिस्टम सेकंड, आई विल टॉक अबाउट प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में क्या क्या रहेगा? जैसे आई विल टॉक अबाउट एपी, जीपी, एचपी, some mathematical treatment I'm gonna show you so that you can solve any question, be it a cat level question or a gate level question or a bank level question। कोई भी क्वेश्चन आ जाए लाइफ में आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, चाहे वो कैट का हो, गेट का हो, बैंक का हो, कोई भी लाइफ में कोई भी क्वेश्चन हो, राइट? तो ऐसे सीखना है मैथ्स एप्टीट्यूड, क्योंकि फर्स्ट टाइम वी आर लर्निंग एप्टीट्यूड एंड दिस शुड बी फॉर एवर। ये आपका, यू कैन से दैट दिस, एंड द थर्ड टॉपिक इज गोइंग टू बी, थर्ड इज गोइंग टू बी व्हाट? थर्ड इज गोइंग टू बी द एवरेज एंड एलिगेशन, राइट? क्या बात करेंगे हम लोग यहाँ पर? एवरेज, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज एंड एलिगेशन, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज द परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, okay? And seventh one is nothing but you can say the interest, okay? Interest, here I'll talk about two kind of interest, simple interest and the compound interest. Many people fail here solving question based on interest, okay? And then we'll talk about ratio, proportion and variations. Ratio, proportion and variations, you can say that 8 number, ratio, proportion and variation। मतलब समझ जाओ कि these topics are given in our menu, right? And we have to start eating one by one। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा एक साथ, नहीं नहीं नहीं, पहले आप नंबर सिस्टम अच्छे से आना चाहिए। नंबर सिस्टम आता है तो आप पूरा समझ जाओगे फ्रॉम वन टू लास्ट, राइट? ठीक है, दैट कर्सर, या then we'll talk about variations, and then you know variation plays an important role, ठीक है? सब जगह रहता है, directly proportional, you know, inversely proportional, okay? X is increasing, by क्या होगा, है ना? by increase होगा, decrease होगा, that you have to understand, right? So next will be ninth chapter is going to be your time and work, time and work, okay? The 10th chapter will be what? 10th chapter is gonna be your time, speed and distance, time, speed and distance, guys. In case of time and work, okay, we will also talk about the application of time and work, that is nothing but pipe and cistern, okay? Pipe and cistern, okay?
where the similar concept is gonna be used, right? In case of pipe and cistern, right? There will be one cistern and there will be a pipe, okay? So there will be two sort of a things, right? मतलब आप टैंक को भरोगे, टैंक से वाटर निकलेगा. अगर टैंक से वाटर निकलेगा उसको हम लोग एज अ निगेटिव वर्क कंसीडर करेंगे. अगर आप टैंक भरते हो तो उसको हम पॉजिटिव वर्क कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क के केस में आता है. इन केस ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये हम लोग प्लेन सरफेस में बात कर रहे हैं, टाइम, स्पेंड एंड डिस्टेंस. लेकिन सपोज आप बैंगलोर या चेन्नई में रहते हो सकता है, तो हो सकता है कि आप सी के बगल में रहते हो, राइट? तो आप बोट में, है ना, यू आर जस्ट बोटिंग, राइट? तो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, राइट, कि ना, कि बोट से और स्ट्रीम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो वहां पर क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, यू नो. तो इसका एप्लीकेशन जो है आप समझ सकते हो, बोट्स एंड स्ट्रीम, राइट? और भी हम लोग बात करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, जैसे कि ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ट्रेन, ओके, कोई भी ट्रेन चल रही है, इतने स्पीड से चल रही है ना, ऐसा होगा वैसा होगा, सो मेनी क्वेश्चंस. सो वी विल डिस्कस दैट. ये सारे एप्लीकेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेन रिलेटेड, राइट? एक कॉन्सेप्ट क्लॉक भी होता है, क्लॉक रिलेटेड कॉन्सेप्ट. सो क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगी. ठीक है, तो एप्लीकेशन वी हैव टू चेक ऑलवेज. Fine. So we'll move ahead and then we'll talk about geometry and mensuration. ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा जो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का. Geometry and mensuration, but here I'm gonna talk about 2D and 3D. Okay, 2D and 3D pictures, and I'll talk about also, I will give you a brief touch about coordinate geometry. ठीक है, okay. The 13 is going to be, this is very important, remember, okay, and you should know this, okay. It is very important for your engineering mathematics also, like what is function, okay, function based questions, inequality, ये बहुत important है, inequalities, right? Quadratic equations, right? You can talk about quadratic and other equations, okay, quadratic equations and other equations, right? And the last, which is nothing but a logarithms, right? जैसे मान लो कोई एक बेस दिया हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट इनटू अदर बेस, राइट? Base change rule, okay, that is only one concept is there and some rules are there, right? You can say, okay, so these things are there that you have to keep in mind, right? And then you can say that permutation and combinations, right? Probability set theory, बस इतने ही कॉन्सेप्ट रहेंगे और कुछ भी नहीं है गाइस. ठीक है, ओके. So I think I repeated, this is 15 and this is 16, right? 17, 18, 19, you can say there will be PNC, ये तो हम करवा चुके हैं, प्रोबेबिलिटी भी करवा चुके हैं, so I'm not going to repeat. And then there is a set theory, ये करवाऊंगा, this I will do, बट बाकी सब कुछ हो चुका है. ये दो चैप्टर तो ऑलरेडी डन है, ठीक है, आपके लिए. ठीक है, इंग्लिश का एक सेशन मैं दूंगा, एक स्पेशल सेशन, लेकिन इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि धीरज सर की इंग्लिश मतलब, you know, I will give you the tarika, you know, of getting complete marks from English, that's it, right? I can't give you the way you know, I am comfortable with English, क्योंकि उसके लिए टाइम लगेगा, राइट? अगर मैं बताने वाला हूँ कि how to become like this, okay, the way I speak English and you know kind of fluency is there, and मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, no translation is going on in my mind, right? ऐसे सीखने के लिए आपको थोड़ा सा आदत डालना पड़ेगा. लेक्चर्स आप देखोगे, धीरज सर के लेक्चर तो मोस्टली इंग्लिश में ही रहते हैं, तो आपको अच्छा लगना चाहिए, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी. ठीक है. बाकी आपको मैं एक तरीका बताऊंगा कि कैसे फिल इन दी ब्लैंक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कैसे आरसी सॉल्व करोगे. जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो हाउ टू सॉल्व दैट. क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है. जैसे मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था, तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी पहले, है ना. फिर उसके बाद दोस्त लोग हंसते भी हैं, आपको पता है ना.
तो फिर आप इम्प्रूव करते हो इंग्लिश को, राइट। तो फिर ग्रेजुअली आप गलत इंग्लिश बोलते हो, फिर सही बोलने लगते हो, राइट। ये होता है मार्केट। चलो, तो ये सारी चीजें हैं गाइस। विदाउट फर्दर ड्यू वी विल स्टार्ट नंबर सिस्टम। एंड अब आप आंसर देना रेडी हो जाओ, लाइक यू हैव टू आंसर मी, राइट, इन एट एवरी स्टेज। ओके, चलो। So before I start all the topic, I will start with the number system. ठीक है, number system plays an important role. Number system. Now, so I think many of you might be familiar with what is system, what is number system, right? So number system is nothing but a group of, you can say, numbers. अगर मान लो बहुत सारे numbers हैं, उसको हम लोग बोलते हैं number system. Group of numerals, you can say, right? Group of numeral. Group of numeral. Okay. Numerals. Okay, just like in physics you might have seen earlier, right, in class 12th or something. Suppose there are one charge or two charge, right? तो अगर मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं, so many charges are there, so we call it system of charges, right? उसी टाइप से आप यहाँ बोल सकते हो कि नंबर सिस्टम, राइट, ग्रुप ऑफ न्यूमेरल्स. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक नंबर्स, राइट, लाइक वी कैन टॉक अबाउट रियल लाइन. आपको रियल लाइन पता है? रियल लाइन में इंटीजर्स देयर कैन बी इंटीजर्स, देयर कैन बी डेसिमल नंबर, सो मेनी नंबर्स आर देयर. तो आप बोल सकते हो कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द रियल नंबर, राइट. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर रियल नंबर, सिंपली रियल नंबर्स. रियल नंबर्स. So real numbers can be of two kind. One can be decimal, one can be integer, right? So we'll start from what? We will start from real number, right? Simple real number, you can say. Okay. So I'm not going to talk about imaginary at this moment. ठीक है, तो आप अगर बात करते हो रियल नंबर की, रियल नंबर्स, from where we will get real number, guys? Real number we will get from the number line. You can recall number line. Number line कैसे दिखती है? Simple ऐसे. You're going from minus infinity to infinity, right? And then this is 0, and you can take, okay, so you 1 2 3, you can say minus 1 minus 2 minus 3. In between numbers are there, right? They are called as decimal number, right? But 0 1 2 3, these are integers, right? So I'm just gonna focus first on integers, right? सबसे पहले हमें इंटीजर में फोकस करना है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, ठीक है? तो रियल नंबर्स में सबसे पहली बात हमें बात करना क्या? पहला है आपका ये डेसिमल, ओके, एंड देन आई विल टॉक अबाउट इंटीजर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट इंटीजर्स, गाइस. इंटीजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो कैन समबडी टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर्स आर देयर? कितने टाइप के इंटीजर्स होते हैं? आई थिंक कंप्यूटर साइंस पीपल बेटर नो, राइट, बिकॉज दे टॉक अबाउट इंटीजर, वेरिएबल, कैरेक्टर, सो मेनी थिंग्स. इंटीजर्स कितने होते हैं? कितने टाइप के होते हैं, नॉट कितने होते हैं, दैट इज रॉन्ग, राइट. इनफाइनाइट इंटीजर्स आर देयर, राइट. इंटीजर्स, there are three integers, three type of integer, right? You can say that one is positive integer, one is negative integer, and there is a zero. Zero is not known as positive integer or negative integer. ये आपको याद रखना है. Zero is called non-negative integer sometimes, or zero is called non-positive integer sometimes. Yeah, non-negative integers, non-positive integers. Okay, remember these names. ठीक है, आपको याद रखना है ये नाम. Yeah, so zero is called what? Zero is called non-negative, non-positive. So when we say non-negative, when we say non-positive, that you have to also keep in mind. ठीक है, so non-negative कब बोलेंगे? When we are talking along with this guy, right? Positive as well as zero, right? Positive as well as zero means non-negative, you can say. Zero as well as negative, you can say non-positive, right? So I think this is clear. So integer मतलब क्या होगा? Does not have any sort of decimal value. Just take the real line and you take 0 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3. These all guys are integers, okay? These all guys are integer, please remember that, okay? So 0, positive and 0 are known as non-positive, you can say non-positive. No, sorry, non-negative you should say, right? Non-negative. And if you take this and this, it is nothing but non-positive.
Okay, now moving forward, you can say that if I say that, what is the meaning of, if you say all positive integers are there, what we call, there is some special name for all positive integer, right? If integers are all positives, right? So all positive integers, right? All positive integers are known as what? Are known as natural number, right? So to be a natural number, if you want to say any number is a natural number, so first of all it should be integer. Okay? It should be integer, and second property what? It should be positive integer. Okay, it should be positive integer. तो अगर मैं बोलता हूँ कि non-negative integer, you can say non-negative integers are natural number, that statement is wrong. नॉन नेगेटिव हो ही नहीं सकता नेचुरल नंबर, राइट? ठीक है, मतलब जीरो इंक्लूड नहीं होगा. If you want to count something, you always go for natural numbers, right? Like you never say that, yeah, in this room there are, how many people are there in this room? You will say you are Dheeraj sir only there, right? One. You will never say 0.5 of Dheeraj sir, right? Okay, so counting is very special thing. See, all positive integers are known as natural number, and we denote this. अगर कोई question में mention है x belongs to the natural number, consider all positive integer, don't consider non negative. मतलब जीरो नहीं होगा, जीरो आना मतलब नॉन नेगेटिव, राइट? नॉन नेगेटिव if you are talking with respect to positive, right? Non negative. Okay, so all positive integers, natural number, right? Natural number is represented by capital N, you can say, right? Okay, so you can say that set of all positive integers, you can say 1 2 3 and so on. Okay, there are infinite natural numbers, so many natural numbers are there, right? Okay, understood? Or you can say that this is very very important to keep in mind. Set of all positive integers are known as natural number. Okay? Now अगर बात करते हैं a set of all non-negative integers, is known as what? Non-negative means positive plus zero. Non-negative means what? Positive plus zero, right? ठीक है, non-negative means positive as well as zero. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? whole number. And that whole number is represented by w, you can say, right? So you can say that w is going to be what? 0 1 2 3 and so on, the set of all positive integers along with 0. Okay, so you can say one statement will be here, what? Ki all whole numbers, all natural numbers are whole number, you say, right? All natural numbers are whole number, but all whole numbers are not a natural number, right? ठीक है, ये याद रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू कैन टॉक अबाउट. Okay, so you can say natural number is a subset of whole number, right? Okay, you can talk about whatever you want to say, right? So this is very important to keep in mind. Okay, so a set of all negative integers, that is whole number. तो ये बेसिक है, आज पहला क्लास है, तो आई एम नॉट गोना टॉक एनी प्रॉब्लम्स और समथिंग. आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दीज पॉइंट्स. ठीक है, आपको याद होना चाहिए. Okay, so this is positive integers, right? Okay, now if you want to discuss further, right, like you have got the natural number, right? Natural number, natural number. Now based on divisibility rule, you can say, right? Based on divisibility rule, I'll talk about this rule in future, right? Okay, any number can be divided by like 2 4 5, whatever, right? What are those rules? So if you want to talk about further classification of natural number, अगर कोई पूछता है आगे का क्या क्लासिफिकेशन है नेचुरल नंबर का, तो आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स अगेन, राइट? वन इज नेचुरल नंबर कैन बी यूनिटी. तो कोई पूछता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर,
smallest natural number is nothing but unity, 1, right? It should not be 0. Okay, now then you can say that prime number, prime number, then you can say that composite number, right? So these are all natural numbers only. अगर हम prime numbers की बात करते हैं so they are natural numbers, right? You cannot say that integers are, you know, all integers are prime number. नहीं, ठीक है? Integers are the prime number. To be a prime number, integers should be there certainly, but that should be natural number, right? तो ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए. दिस कनेक्शन, राइट? कनेक्शन फ्रॉम इंटीजर, हाउ natural number is connected with the integer, what kind of integer, and how prime numbers are connected. Now the definition is not enough, right? अगर आपको composite मतलब prime number की definition पता है, जैसे you might have heard a name called G.H. Hardy, right? Ramanujan जो Ramanujan थे, right? He went to London and then तो जो उनके गाइड थे, ठीक है? तो he wrote one book also, okay, fundamental arithmetic, okay? तो जो बेसिक मैथ होती है उसमें उन्होंने एक बुक भी लिखा है, ठीक है? तो उन्होंने ये बोला था कि कंपोजिट नंबर अगर कोई है, इफ देयर इज अ कंपोजिट नंबर, राइट, सो यू कैन ऑलवेज राइट कंपोजिट नंबर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, राइट? तो आप बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स इसमें होंगे कंपोजिट नंबर में, राइट? तो प्राइम नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इसमें जो फैक्टर्स आएंगे या डिवाइजर, यू कैन से देयर विल बी 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, okay? These are only the only factors, okay? Only factors present in case of prime numbers. You can say 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on, right? So these kind of numbers are prime numbers, okay? Like 1 is not the prime number. Remember, 1 is not a prime number. If someone is going to ask you what is the smallest prime number, so you will say 2, ठीक है? क्योंकि जब आप इसका फैक्टर करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन, व्हेन यू गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट, वी कॉल इट प्राइम फैक्टराइजेशन. Prime factorization means whatever factors which come out to be, that should be prime number, right? 2, 3, 5, 7. तो जब भी आप किसी भी चीज का स्क्वायर रूट भी निकालते हो ना, तो मान लो अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो यूजिंग सम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सो डोंट टेक एनी अदर नंबर लाइक कंपोजिट नंबर, ओके? ऑलवेज टेक व्हाट? प्राइम फैक्टर्स, ठीक है? तो आपकी लाइफ ज्यादा सिंपल रहेगी. जैसे 2 लिया, 3 लिया, डोंट टॉक अबाउट 4, talk about 5, then 7, then 11, then 13. तो आप जल्दी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है? नहीं, हमेशा कंफ्यूजन रहता है while taking LCM, while taking so many things, right? कि मतलब कैसे, तो composite number means it will be having many factors, you can say, okay? Any number can be written in terms of its prime factorization, right? Okay, so please remember this. Okay, so what is prime number? Prime number is, first of all, is a natural number larger than the unity, you have to say, is a prime number. And if it does not have other divisor, no divisors are there other than what? Unity and the number itself, right? So unity is not a prime number. That is very important question asked in the interviews, right? ये बहुत important है. Now there are some properties of prime numbers, you can say. The lowest prime number is going to be 2, as I told you. The 2 also can be considered as even prime numbers. आप बोल सकते हो कि 2 को even prime number बोल सकते हो, right? This 2 is a even prime number, smallest as well as first even prime numbers. Okay, 2 is only even prime number. अब देखो only एक वर्ड आ गया. कोई पूछता है can you tell me even prime number, right? So there is only one guy who is even, that's it. 2 इज द इवन प्राइम नंबर, और कोई प्राइम नंबर है ही नहीं पूरे दुनिया में. आप ये भी लॉजिक याद रखो, राइट? So 2 is the smallest and 2 is the even, only even, right? So you can say that 2 is the smallest prime number, and remember this is very important. 2 is the smallest prime number, and remember 2 is the only even. Okay, 2 is the only even prime number.
Okay, so I think this is clear for all, right? It's a very simple concept that you have to keep in mind always. Now, so these are the concept, okay? And the lowest odd prime number, if someone is going to ask, what is the lowest odd prime numbers? Okay, these are the property that we can talk about. Lowest odd prime number will be 3. So these are few property that you have to remember. That's it, okay? Fine. Now, how do we check whether the number is a prime number, right? So simple it is, right? Any number is given, okay? Suppose we have got, we have got any number like, 239 if you have got, right? So what you have to do first, you can take the square root of that number and take the smallest integer, okay, out of that, okay? And then below that square root, whatever value of square root you have got, right? Just आपको क्या करना है, सारे प्राइम नंबर्स को लेना है और चेक करना है, whether it is divisible, right? Okay, by the given number. अगर कोई भी डिविजिबल है, okay, then वो प्राइम नंबर नहीं होगा. अगर कोई डिविजिबल नहीं है तो प्राइम नंबर होगा. क्यों? अगर डिविजिबल होगा तो वहां पर क्या होगा, डिवाइजर्स आएंगे, राइट? तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है. okay? So yes. So I hope this makes sense to all. I hope you guys understood what is the meaning of prime numbers. ठीक है? So prime numbers is one of the very important concept, okay, which will be useful throughout the number system. ठीक है? अब बात करते हैं guys decimals की, right? Decimal is one of the very important concept, right? Decimals. ठीक है? In decimals, basically, how do we get decimal, right? How do we get decimal? When you take two integers, you can say one integer is p, second integer is q, right? When you divide this p and q, right, so you're going to get decimals, right? You're going to get decimal, okay? So if you are taking the ratio of what? Ratio of p and q, okay, where p and q are what? Where p and q are basically the integers, okay, and q is not equal to 0, you can say. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call it rational number. What we call it? Rational number. We call it rational number, right? I hope this makes sense to all, right? So if you are able to take two ratios, okay, if you're able to take the ratio of two integers, right? Ratio of two integers are nothing but what? The rational number, right? लेकिन जब आप इनको डिवाइड करते हो वाया डिविजिबिलिटी रूल, एज आई सेड, डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे नंबर सिस्टम में, बिकॉज आफ्टर डिवीजन ओनली यू विल गेट फैक्टर्स, राइट? After division only you can check whether it is a even number or odd numbers, right? So many things are there. You can get factors, divisors, right? You can talk about remainders, right? बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है? सॉरी, यू कैन से divisibility rule, right? Divisibility concept. ठीक है? So if p by q is given, right, ratio of, you can say, p and q, where p and q are integers and q should not be equal to 0, right? So decimal number will be what? A decimal number is nothing but a number, you can say, with a decimal point in it, right? क्या? Decimal number क्या होगा? Decimal number will be having with a decimal point. Decimal point will be present here. जैसे example ले लो आप. Example like 1.5. Example is nothing but 1.5. 3 point, you can say 21, right? So how, what is that situation? Can you describe one situation where you will get decimal number? Yes, I can describe. मान लो आपके पास क्या है, 5 children are there. Suppose there are 5 children. Okay, if there are 5 children and you have got 10 chocolates, आपके पास 10 chocolates हैं, 10 chocolates are there and 5 children are there, and you want to distribute these 10 chocolate among 5 children, right? So what, how many chocolate each children is gonna get? आप बता सकते हो यहाँ पर कि sir it will be like 10 by 5, which is 2 chocolates each children is gonna get, right? So in this situation we are not getting any sort of decimal number, right? No decimal, only integer we are getting.
But suppose the situation is like this. Suppose the situation is what? Now, if you consider, what if we have the same thing with 9 chocolates among 5 children, right? So अगर आपके पास 9 chocolates हैं and you have to distribute between 5 children, you can say, right? तो 9 chocolate मतलब 9 by 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 by 5, 9 by 5. Okay, so you just take a look here, right? 9 by 5 कितना आने वाला है? Understood? So it will be like 5 1 जा 5 and it is 1, 1.8. So 1.8 chocolates you're going to get to 5. Understood? So in this situation, you see guys, in this situation we are getting what? We are getting the decimal number, right? तो ये बहुत important समझ. अगर कोई भी चीज डिविजिबल है completely, right? So you will not get decimal points. ठीक है? Decimal numbers. Okay, so I think this is clear for all. Okay. As I said that composite numbers are what? Composite numbers. Composite numbers. मैं decimal के बारे में और बात करूंगा. And we have to talk about this rational number, right? Rational number. Rational number का जो, if number is not a rational number, so you can say that that is going to be irrational number. Irrational. Okay. So let me finish composite, then I will come back to rational number, right? That is very important to discuss. ठीक है, आपको भी समझ में आना चाहिए वो चीज. तो अगर हम बात करें कंपोजिट की, बहुत अच्छा नंबर होता है कंपोजिट, राइट? कंपोजिट नंबर्स. तो कंपोजिट नंबर मींस व्हाट? इट इज अ नेचुरल नंबर. सबसे पहले याद रखना है, इट इज अ नेचुरल नंबर एंड दैट हैज एटलीस्ट वन डिवाइजर डिफरेंट फ्रॉम यूनिटी एंड द इटसेल्फ. एटलीस्ट वन डिवाइजर. It can have, like, prime number will be having only unity as well as the number itself, right? दो डिवाइजर होते हैं वहाँ. लेकिन कंपोजिट में क्या होगा? बहुत सारे. तो बोल सकते हो कि एवरी कंपोजिट नंबर n कैन बी फैक्टर्ड इनटू प्राइम फैक्टर्स, राइट? कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं. किसी भी नंबर को अगर आप इन टर्म्स ऑफ, यू कैन से, प्राइम फैक्टर्स में लिखते हो, राइट? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ओके, फैक्टर्ड इनटू इट्स प्राइम फैक्टर, तो उसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं या कि स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट? जैसे कि मान लो ओके, लाइक 2 to the power 3, sorry, suppose you have got 24. Now 24 is a composite number. How? 2 into 2 into 2 into 3. So it is nothing but 2 to the power 3 into 3. These are the standard forms of a number, right? Okay, so we call this as what? More than two divisors should be there, right? Unity as well as the number. Apart from that, one more divisor should be there. At least 3 divisor, okay, to be called as a number is what? The composite number. Okay, I think this is clear. So every number, you can say, every composite number n can be factored into its prime factors. ये याद रखना. Every number, every composite number, you can say, can be factored. Every composite number can be factored, okay, into its prime factors. Into its prime factors. So every composite number can be factored into its prime. Prime factors मतलब समझ रहे हो ना? There will be 2, 3, 5, 7, 11, 13. Then you go on like 17, right? 19, okay? Does not have any other divisor other than the unity and the number itself. ठीक है? Fine. So ये बहुत important है. It's a first, you can say, fundamental theorem of arithmetic. Okay. Fine. Now these prime factor can have any powers, right? Like if prime factors are getting repeated, okay, like 2 into 2 into 2, so the 2 will be having 3 powers, 2 to the power 3, you can say, right? So these things are very important, right? You can always remember, right? So if I talk about rational number, guys, rational number is nothing but, let me come back again, rational number. Now all the ratios are not the rational numbers. That also you have to keep in mind. Okay, if you think that p by q, where q is not an integer, I mean
q is not equal to 0, okay, and you can say that the ratio is gonna be rational number. ऐसा नहीं होता है हमेशा. Not always this statement is true, right? It depends upon the decimal expansion, right? So you know, suppose you are dividing two numbers, okay, so they can have different sort of decimal expansion, right? Decimal expansion का मतलब क्या है? After the decimal point, the number can be, you can say, after decimal point some number will be there and then terminated, right? मतलब that is over, right? If you take 1 by 4, अगर आप 1 by 4 लेते हो तो 1 by 4 means what? 0.25, right? That is fine. 25%, right? So आपका after decimal point 2 digits are there, that's it, right? Sometimes 3 digit, 4 digit, fine. Sometimes ऐसा भी होगा कि after decimal point that number can get repeated also, right? ओके तो हम आपको अब न्यू डेफिनेशन देने वाले हैं रेशनल नंबर की. आप देखो, decimal expansion can have four categories, right? One is nothing but terminating decimal expansion, and second it can be the non-terminating decimal expansion, right? एग्जाम्पल में मान लो लेता हूं कि 1/4 which is 0.25, yes it is terminated, right? Only less number of digits are there, खत्म. नॉट, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, जैसे कि मान लो आप लेते हैं कि 1/3 is equal to 0.33333, okay, now this 3 is what? 3 is repeating after decimal point, so we call it non-terminating. लेकिन non-terminating has also got two patterns, right? Remember, non-terminating has got two patterns. I'm just removing this guy here. You can say non-terminating can occur in two manner, right? Okay, one is called recurring. Recurring means after decimal point, that number is getting repeated, or you can say that kind of periodicity is there, right? Okay, and non-recurring. So remember, recurring and non-recurring, right? So मान लो देखो, if decimal expansion is going to be terminated, it is certainly a rational number. It is a rational number, right? If any decimal expansion is given, and if you are able to write, like if you take two integers and divide it, you are going to get what? You are going to get terminated decimals, right? Decimal expansion is gonna be terminated, ठीक है? तो उसको हम लोग बोल सकते हैं रेशनल नंबर ऑलवेज. लेकिन इस केस में कब बोलोगे रेशनल नंबर? देखो ये डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग is called rational number. If any decimal expansion is what? If any decimal expansion is non-terminating as well as recurring, then you can get the rational number. Okay, you can get the rational number. But if non-terminating and non-recurring is there, they are called irrational number. Remember, they are called what? They are called irrational number. Irrational. They are called irrational number. Okay, remember this is very important point, guys. Irrational number. Okay, तो न्यू डेफिनेशन क्या हो गई रेशनल नंबर की कि नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आर कॉल्ड रेशनल नंबर, राइट? एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ दिस? यू कैन से एग्जांपल इज going to be 1/3 equal to 0.333333. You can say 0.3 bar. Sometimes we write like this, okay, if something is getting repeated, it is called recurring. But it is also not terminating, you know, dot is there, right? 1/3 is called as rational number. Okay, so many people do not understand. So देखो 8th की definition क्या है? What 8th definition says, if any number can be written as p by q form where p and q are integers and q should not be equal to 0, right? If you consider NCERT standard textbook, right? Okay, but as we are engineers, right, now we have to further go on, right? We try to divide those two integers and we look at we examine this decimal expansion, right? After decimal point, how much it is going to expand, right? So ye to always, this guy is always what? Always term, you know, this is nothing but a rational number only. Always.
but this is not okay rational number, right? Okay, so I think this is clear. तो रेशनल एंड इरेशनल ये आप याद रखना, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर मींस व्हाट? स्टैंडर्ड फॉर्म मींस नथिंग बट सपोज यू टेक टू इंटीजर्स, like I have taken 2 by minus 3, or you can say that I have taken 14 by you can say that 16, right? Okay, now if someone is going to ask you are they in their standard form, no, it is not the standard form of rational number. This, you know, standard form rational number is nothing but minus 2 by 3, right? You have to take this negative sign always in the top, in the numerator, you can say numerator में होना चाहिए negative sign, ठीक है? Or in this case you see here still you can further cancel out, right? So it will be goes like 2 7 ja 14 and 2 8 ja, so it is nothing but 7 by 8. Now this guy is a standard form, right? ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि देयर शुड नॉट बी एनी फैक्टर लाइक यू नो कॉमन फैक्टर्स इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, राइट? तो आप उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर में लिखना है, राइट? चलो, नाउ मैंने आपको एक चीज नहीं बताया है, आप अगर इनको देखोगे जैसे 7 by 8 है, 7 by 8 को आप बोल सकते हो इट लुक्स लाइक अ फ्रैक्शन आल्सो, राइट? So what is the difference between fraction as well as the rational number? ये भी आपको पता होना चाहिए, fraction and the rational number का difference। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। देखो rational number is nothing but a ratio of integers. Integer can be anything, right? It can be negative, it can be positive, it can be anything. Fraction का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास पूरा you have got entire India, right? Now you want to give away some part of India to somebody, right? धीरज सर को देना चाहते हो, ठीक है। मतलब मान लो आपके पास पूरा लैंड है, some part of a land you want to give to धीरज सर, right? So what you will do? Part of a whole, right? So part of a whole, right? So part cannot be negative, right? Part cannot be negative, है ना? तो मतलब आप क्या करोगे कि रेशियो ऑफ होल नंबर अगर करोगे a upon b, where a and b are whole numbers and b should not be equal to 0, right? इसको हम लोग को क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। लाइक 2 by 3 is a fraction, but minus 2 by 3 is not a fraction, okay? Minus 2 by 3 is going to be a rational number, ठीक है? Okay, this is the distinction, keep in mind, okay? We will not call it ratio of integers in case of fraction. We'll call it, see, they look like what? 2 by 3. So here we have to be very specific, right? We have to be very specific. You can say that ratio of positive integers or non-negative integers, you can say. Ratio of non-negative integers are going to be what? The fractions, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है आपको पता होनी चाहिए, राइट? अब अगर इधर कोई बोलता है कि क्या डेफिनेशन है, तो p by q, where p and q are integers and q should not be equal to 0, okay? So I think this is clear for all, yeah? Any doubt till this point, guys? क्योंकि मैं आपको सारा बता रहा हूँ, I think you might be getting something new also from this, तो याद रखना। अब जैसे कोई बोलता है भाई 2 by 3 minus 2 by 3 is a rational, yes, but this is not the this is not the fraction, ठीक है। Now the question is as we talked about rational irrational number, right? देखो कोई भी अगर नंबर रेशनल नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring, non-terminating as well as non-recurring, non-terminating as well as non-recurring, okay? Non-terminating as well as non-recurring, okay? So
It's a very important concept, okay? Non-terminating and non-recurring. Non-terminating and non-recurring. So why do we study irrational number? ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि इसका रोल क्या है, what is the need of this, right? So there are so many application of irrational number, guys. Basically you will get आपको ये मिलेगा ज्योमेट्री में, ठीक है? अगर मैं ज्योमेट्री की बात करता हूँ, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिंपली, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आप बात करते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल having side a, you can say, so it is nothing but a square root 3 by 4 something, ठीक है? Now this root 3 is present, this root 3 is nothing but what? Irrational number, right? root 3, root 2, pi, आप कोई भी नंबर ले लो, है ना? They will be always non terminating and non recurring, right? तो इनको हम लोग बोलते हैं irrational number, right? अब इसमें रोल क्या, देखो ज्योमेट्री के कोई भी फॉर्मूले में अगर जैसे पाई, एरिया ऑफ द सर्कल पाई, ठीक है, यू कांट रिमूव दैट पाई, ठीक है? अब इट्स ओके इफ वी कैन अप्रोक्सीमेट पाई 3.14, लेकिन वैसे अगर ऑप्शन में पाई दिया है so you can't ignore it, right? That is very important. So a square root 3 by 4, so this irrational number will be also present in the options, also will also be present in the options, okay? You can't avoid it जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, okay? So suppose you have to find the area of equilateral triangle, right? So root 3 will be also present in the options, right? So that is very important to keep in mind. Yeah. ये याद रखना है, ये लास्ट तक रहता है, यू कांट डिसअपियर इट, यू कांट मेक इट डिसअपियर, ओके? आप इसको हटा ही नहीं सकते हो। इरेशनल नंबर को कैसे हटा सकते हैं? जब आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, रूट 3 इंटू रूट 3 करोगे तभी आपको फ्री करेगा, ठीक है? एक ये रूल हो गया। दूसरा एप्लीकेशन जो इरेशनल नंबर का आएगा आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन यू आर सॉल्विंग, okay, like okay, any type of equation you are solving, so you will get some roots over there, roots of the equation, right? So equation का कोई भी root, if it is coming out to be like this, you can say 2 plus root 3 kind of thing. जैसे मान लो एक रूट ऑफ द इक्वेशन ये है, एक रूट आपका ये आ गया 2 plus root 3, तो बाय डिफॉल्ट आप बता सकते हो कि सर वहां पर एक और रूट होगा, वो होगा ये, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो, राइट? ये इरेशनल नंबर की स्टोरी है। इन केस ऑफ इरेशनल नंबर इट हैपेंस जस्ट लाइक वी आर टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना कि आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 सॉल्व कर रहे हो, राइट? तो यू गॉट समथिंग लाइक a प्लस आयोटा b, राइट? वन रूट, देन सेकंड रूट क्या होगा, ऑटोमेटिक बताओगे सर a माइनस जे बी, मतलब आपको सोचना ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट यू विल से, ठीक है? दे ऑलवेज लिव इन पेयर, राइट? दे ऑलवेज बी इन पेयर, ओके, रिमेंबर। तो इन द सेम मैनर अगर मान लो 2 प्लस रूट 3 आ गया, ये इरेशनल नंबर है, सर्टेनली इरेशनल, रूट 3 प्रेजेंट है मतलब इरेशनल है, राइट? तो आप डायरेक्टली उसका सेकंड रूट फाइंड कर सकते हो। ये गेट में भी डेटा साइंस में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है? आपके एप्टीट्यूड में नहीं, मेन एग्जाम में। मान लो आइगन वैल्यू एक दिया है, वन आइगन वैल्यू इज 2 प्लस रूट 3, तो दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी? मान लो एक आइगन वैल्यू आपकी 2 प्लस रूट 3 है, दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी? निकालने की जरूरत नहीं है गाइस, आप डायरेक्टली बोलोगे सर 2 माइनस रूट 3 होगी, ठीक है? तो ये लॉजिक्स हैं आपके एप्टीट्यूड। देखो मैथ्स में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, आपका बेसिक तो स्ट्रांग होना चाहिए, ये सब बेसिक्स हैं, राइट? तो ये पॉइंट मेरा काम है हाईलाइट करना, माई जॉब इज टू हाईलाइट दीज पॉइंट्स, ठीक है? तो याद रखना कि एक ये कॉन्सेप्ट है। अब मान लो जैसे 1 बाई रूट 3 दिया है, ये भी तो इरेशनल है ना? तो अगर मान लो तुमको डिनोमिनेटर से रूट 3 हटाना है, तो हैव टू रिमूव रूट 3 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? रूट 3 बाई 3 करोगे। कैसे? हाउ यू आर गेटिंग दिस?
यू हैव टू गो फॉर रेशनलाइजेशन. एक कॉन्सेप्ट होता है रेशनलाइजेशन, 1/√3 इंटू √3/√3 विच इज √3/3. ये रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी कैसे आया? बिकॉज ऑफ दीज फेलोज, राइट, लाइक इरेशनल नंबर, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, वैसे आप नहीं हटा सकते हो. यू कांट रिमूव दिस √3 फ्रॉम दी unless you multiply √3 in the denominator only, you can't remove it. Okay, आप देख सकते हो. You are rationalizing, but still √3 will be present always, right? ये एक मैजिक है. ये आप ऑब्जर्वेशन करोगे कभी अपने लाइफ में तो ये मैजिक दिखेगा. ठीक है, everyone understand these concepts? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. आज के सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे. In the next session, I'll talk about various concepts, like I'll talk about HCF, highest count factors, or sometimes we call it GCD as well. इसमें मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग तरीका बताऊंगा जिसको बोलते हैं मेंटल एल्गोरिदम, राइट. आई मीन mentally how can you find HCF, right? Mentally how can you find HCF, right? How can you find HCF, right? And mentally how can you find LCM also, right? ये सारी चीजें बताएंगे, राइट. तो इनके बेस में बहुत सारे क्वेश्चंस गेट में आते हैं. Based on HCF and LCM, you will get some word based questions, word based problem, you can say word based problem. Okay, so these things I will be talking about. Yeah, so guys, if you have any sort of doubt you can ask now. ठीक है, बाकी you have to work on your calculations, guys. Basic calculation is one of the very important key. So basic calculation, जिनका बेसिक कैलकुलेशन वीक है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑलवेज, राइट. बेसिक कैलकुलेशन आई मीन टू से दैट हाउ फास्ट, ओके, you can add, how fast you can multiply, how fast you can divide, how fast you can think, तब आपका आंसर जल्दी आएगा. ठीक है, the basic calculation you work on, right? And if you don't know, I'll tell how to subtract faster, how to add fast, right? Okay, so we'll meet in the next session, and if you have any sort of doubt, guys, always reach to me. ठीक है, आप लोग हमेशा ओपन, आई एम वेरी ओपन टू ऑल, राइट. Yes, any sort of doubt, please ask. If you don't have any doubt till now, next session is gonna be on the problem as well as some important concept like HCF, LCM. ठीक है, नेक्स्ट सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. प्लीज डू ज्वाइन, राइट, एंड कीप इन माइंड दीज प्राइम फैक्टर्स. ओके, प्राइम फैक्टर मेथड्स. Nitali, your what is weak? Your calculation is weak. ठीक है, so we'll catch up for that, right? Okay, thank you so much, guys, and keep learning and let me know any sort of like you just keep revising, okay, everything. Needless to worry, मैं आपको बताऊंगा. I'm very sure that you will get more than 10 to 12 marks in the GATE exam. ठीक है, few can also score 15 out of 15 अगर वो मेरा लेक्चर ईमानदारी से फॉलो करते हैं. ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ईमानदारी नहीं शो कर पाते ना. तो यू हैव टू बिकम ऑनेस्ट. अभी 10 दिन में ही आपका पूरा 15 नंबर फ्री में आ जाएगा, राइट. तो कितना अच्छा है. ओके, ठीक है, स्टे tuned and tomorrow we'll catch up again, right? So I'll inform in the group accordingly, right? Thank you, take care.